नमस्कार। मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप है फन विथ हाइपरबोला एक्रोबेटिक स्टिक, और जो कि सपोर्टेड बाय स्पॉन्सर्ड बाय है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC DST न्यू दिल्ली के द्वारा, और मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी MPCST भोपाल। और हमें इस प्रोग्राम को हम रीजनल साइंस सेंटर ऑर्गेनाइज करा रहा है। मैं आप सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द से जल्द हमें ज्वाइन करें, और प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करें। आप लोगों का सभी पहले यहाँ पे हम इंटरेक्शन होगा, उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जा कर के देखना है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करें, और चैट बॉक्स में अपना नाम और आपका स्कूल और आप कहाँ से हैं प्लीज़ उसे टाइप करें। चैट बॉक्स में आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आपका स्कूल, इसको टाइप करें और जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करें। एक बार फिर पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं MPCST का धन्यवाद करता हूं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। एक बार पुनः मैं अपने सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं। तो मैं सभी स्टूडेंटों को कहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करें। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन DST न्यू दिल्ली का और MPCST भोपाल का। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल आप सभी बच्चों का स्वागत करता है, हमारे सभी दर्शकों का स्वागत करता है। फन विथ हाइपरबोला एक्रोबेटिक स्टिक, ये रीजनल साइंस सेंटर का एक बहुत ही फेमस एग्जिबिट है, और इसमें आप सीखेंगे कि कैसे एक्रोबेटिक स्टिक क्या होता है और कैसे हम हाइपरबोला को डिज़ाइन करते हैं। हाइपरबोला एक बहुत ही यूनिक कर्व है जो कि कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। क्लास 11th में आपने इसको पढ़ा होगा। कॉनिक सेक्शन से कई सारे कर्व बना सकते हैं, लेकिन हमने हाइपरबोला को लिया है और एक्रोबेटिक स्टिक उसका एक पार्ट है। तो मैं अब सभी स्टूडेंटों से निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द जुड़े। मैं आप सभी दर्शकों को से बोलूंगा कि आप जल्द से जल्द हमसे जुड़ें, और गूगल मीट पे जिन बच्चों के पास लिंक है वो प्लीज़ हमें जुड़ें। और हमने सभी दर्शकों को अपने बच्चों को हमें लिंक भेज चुके हैं। कृपया उस लिंक को लॉगिन करके आप जुड़े हमें से, और जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स पे लिखें अपना नाम, आप किस स्कूल से हैं और आप कहां से हैं। प्लीज़ ये जरूर लिखें कि आप कहां से हैं। तो जल्दी जल्दी आप प्लीज अपना नाम लिखें, जल्दी जल्दी अपना नाम लिखें, जल्दी जल्दी आप कहां से हैं, अपना कर दिया अपने स्कूल का नाम लिखें और अपनी जगह का नाम बताएं प्लीज। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं हमसे। अक्षिता जैन सागर पब्लिक स्कूल, अमन श्रीवास्तव सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ईशांत माथुर माउंट फोर्ट, खुशी राठौर ग्रेफाइट हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीदीप, अभिनव शर्मा केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, यश कुमार सैनी क्लास 11 गवर्नमेंट सुभाष एक्सीलेंट डिस्ट्रिक्ट भोपाल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्लीज हमें जल्दी से जल्दी लिखें।
दिवाकर सैनी, ओमी सिंह चौधरी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ओएफ इटारसी। वेरी गुड, जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी हमसे जुड़िए और लिखिए यहाँ पे। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपना नाम, अपना स्कूल और किस जगह से आप हैं वो हमें लिखें यहाँ पे चैट बॉक्स में। और कुछ ही समय बाद हम YouTube पे लाइव होंगे और आप सब यहां से हमें लीव करके, गूगल मीट को लीव करके YouTube चैनल, YouTube प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और वहां से हमारे लाइव प्रोग्राम का टेलीकास्ट देखेंगे। हम वहां पे YouTube के चैनल पे लाइव रहेंगे। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करें और अपना नाम, अपना स्कूल का नाम और किस जगह से आप हैं वो उसको जल्दी से डालें। ईशान चौहान, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 भोपाल। दिव्या शर्मा, क्लास 11 सेंट जोसेफगंज बसोदा MP। हर्षित पाठक, केंद्रीय विद्यालय संगठन शिवपुरी मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया, प्लीज जल्दी से जल्दी हमें भेजें। रेणुका त्रिवेदी, केंद्रीय विद्यालय भोपाल। मैं देख रहा हूं ये सभी स्टूडेंट हमको जुड़ते जा रहे हैं। सिंधुपाली कार्तिक, खुशी गुप्ता ने हमें ज्वाइन किया है। खुशी गुप्ता, प्लीज जल्दी से अपना नाम, आप किस स्कूल से हैं और किस जगह से हैं उसको हमें यहाँ पे डालिए चैट बॉक्स में। वंशदीप शर्मा, केंद्रीय विद्यालय संगठन शिवपुरी। जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करें। अमय श्रीवास्तव, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी मध्य प्रदेश। आपको जैसा कि पता है कि आज का हमारा टॉपिक है फन विथ हाइपरबोला। आपने पढ़ा होगा कॉनिक सेक्शन में कि हाइपरबोला एक स्पेशल टाइप का कर्व है। हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल, ये सारे कॉनिक सेक्शन के ही पार्ट हैं। और हमारी जो किट है वो एक्रोबेटिक स्टिक एक हाइपरबोला कर्व को रिसेंबल करेगी। तो आप उस सभी कर्व को देखेंगे और कैसे इस स्टिक को आप, एक्रोबेटिक स्टिक को आप खुद बना सकते हैं, वो आप देख सकेंगे। और हम आपको कॉनिक सेक्शन के वो छोटे छोटे कंसेप्ट बताएंगे जिनको आप मिस कर देते हैं, जिनके बारे में आप शायद नहीं पढ़ पाते हैं और या किसी कारणवश आप उसे छोड़ देते हैं। हम उन सभी छोटी छोटी बातों पे एक बार फोकस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे कॉनिक सेक्शन का रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस है। अगर आपने हमारा RSC को विजिट किया है, साइंस सेंटर को विजिट किया है, तो आपने देखा होगा कि एक्रोबेटिक स्टिक हमारी एक एग्जिबिट है। तो आप जल्दी से जल्दी आप हमें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें ज्वाइन करें। शैलेंद्र श्रीवास्तव, वेरी गुड, गवर्नमेंट सुभाष एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। सुमित कुमार, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बैरागढ़ भोपाल। खुशी गुप्ता, सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल। अपूर्व शर्मा, KV2 भोपाल। प्लीज ज्वाइन करें, जल्दी जल्दी हमें चैट बॉक्स पे लिखें। और आप में से कोई बच्चा कॉनिक सेक्शन के बारे में बताना चाहेगा हमें, तो वो हमें बता सकता है। एनीबडी वांट्स टू, कोई बताना चाहेगा कि आपने पढ़ा है उस चैप्टर को, कैसा लगा आपको वो चैप्टर? कुछ ही समय में आप लाइव होंगे, तो प्लीज जल्दी से जल्दी आप हमें ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करें। सुमित कुमार, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बैरागढ़। ठीक है, अब आप, मेरे ख्याल से हमारे जितने स्टूडेंट थे वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। Okay, very hearty good evening to all our participants and viewers of the program on our YouTube channel.
the online workshop on fun with Hyperbola एक्रोबैटिक स्टिक। आप सभी का स्वागत है आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली एंड एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल मैथमेटिक्स डे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हमारे सभी गूगल मीट के पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ अभी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ मैं उन सभी का भी स्वागत कर रहा हूं जो हमें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आंचलिक विज्ञान केंद्र के इस ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। Yeah, welcome. Thank you, sir. ओके, जैसा कि आप लोगों को मेल में भी बताया गया था, और मेल में भी बताया गया था कि जो हमारा मेन प्रोग्राम रहेगा वो हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जो कि हम ऑलरेडी लाइव हैं वहाँ पर। तो जिन लोगों ने यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी डिटेल्स को हमारे साथ साझा करें। जल्दी से जल्दी अपना नाम, अपनी क्लास और आप किस प्लेस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये हमारे साथ शेयर करें, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू आवर क्लास एज वेल। सभी पार्टिसिपेंट्स जल्दी अपना नाम, अपनी क्लास और आप किस प्लेस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये हमारे साथ शेयर करें in the Google Meet platform and on our YouTube channel as well. So जो भी दर्शक हमें हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में अपना नाम, अपनी क्लास और अपना फ्रॉम विच प्लेस यू आर पार्टिसिपेटिंग वो हमारे साथ साझा करें, ताकि हम जल्द से जल्द कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। और यहाँ पे जो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग गूगल मीट के पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 31 में से 29 मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं। सॉरी, 31 मीन्स 29 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर एडमिट अपनी डिटेल्स को शेयर कर दिया है, वो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म से लीव करके हमें हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करें। सभी बच्चे जिन बच्चों ने यहाँ पर हमें टेक्स्ट कर दिया है, वो जल्द से जल्द हमारा इस प्लेटफॉर्म को लीव करें और हमें यूट्यूब पर ज्वाइन करें प्लीज़। ओके सर। सर मैंने क्लास में की। तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, इस चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज यूट्यूब चैनल में भी आप लिख सकते हैं। राहुल वहां से चले जाओ, आप वीडियो प्लीज शेयर करिए प्लीज। अभी जो मीटिंग में लोग हैं, कोमल, रोहित, दिव्या, अतिशय और बाकी के जो लोग मीटिंग में हैं, प्लीज़ जल्दी अपनी डिटेल्स को शेयर करिए और इस मीटिंग को लीव करके हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करिए प्लीज़। खुशी गुप्ता एंड ऑल द पार्टिसिपेंट। अभी जो लोग मीटिंग में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी सरिता परिहार जी, ओमी सिंह जी, खुशी गुप्ता, कोमल, दिव्या, आप सभी लोग अपनी डिटेल्स जल्दी से जल्दी यहाँ पे शेयर करके प्लीज़ हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करिए। ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज़, आई रिक्वेस्ट कोमल, Sarita, Omi, Khushi, Divya to please leave this platform and join us on our YouTube channel on which we are already live. Thank you. Sir, you asked. Sir, you told to begin with us. Sorry? Sir, you asked. Yes, Divya, please say. Sir, you told to begin with our science hyperbola. I'm not. You told to begin with our science hyperbola. Excuse me, sir. Yes.
Yes, Sarita. I wish to define hyperbola. Oh, yes, please. So according to me, hyperbola is a curve which is on plane surface or on the paper, Okay. and it has equations, or maybe some equations are there. It is hyperbola has two pieces, and it has the symmetrical or mirror image of each other. Okay. सो यस, मैं जस्ट कुछ ही देर में अभी अपनी क्लास शुरू करने चाहूँगा. बाय द टाइम प्लीज जो लोग दिव्या यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Yes, please continue. Sarita, you please, the name ID Sarita पर here, you please leave the meeting and join us on our YouTube channel, please. Sir, may I begin? Yes. Sure, sir. Yeah, you may continue. Yes, Divya, please continue. Sir, hyperbola, it is a symmetrical open curve which is formed by the interaction of two circular cone on a plane, and it is a smaller angle with its axis than the side of the cone. And on a plane, it is two symmetrical spaces it shows, and it has some eccentricity, and it has some equations which defines it properly. Okay. पूरी ब्रीफ अभी मैं हमारे कलीग्स एनबी शाहू सर आपको पूरी प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाएंगे. तब तक मैं कुछ डिजिटल मीन से आपको आज की किट के बारे में, हाइपरबोला एक्रोबैटिक स्टिक के बारे में बात करूंगा. बाय द टाइम आई रिक्वेस्ट माय कलीग राहुल टू प्लीज leave. Divya, you may please take leave. Thank you, sir. विजिट किया है. So, I hope you all can see us on our YouTube channel. Okay, I hope you can see us on our YouTube channel. जल्दी अगर YouTube पर भी आपको सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं, so that I can start the workshop. If you can see us, if you can see the exhibit, that is acrobatic stick, and beside the exhibit we have placed one kit as well. If you can see, अगर आप सभी लोग हमारी किट को देख पा रहे हैं तो जल्दी एक चैट बॉक्स के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करिए, so that we can continue. सभी लोग अगर देख पा रहे हैं तो ओके, थैंक यू वेरी मच. तो इसमें okay, now let me start the workshop. Yes sir, all are clear. Thank you Harshit, thank you Rohit, thank you Atisha, thank you Anushka, thank you Vanshdeep, thank you to all of you. Very hearty thanks to all of you on the behalf of Regional Science Center Bhopal for showing your interest in such programs and the online workshop that is being organized by Regional Science Center Bhopal in collaboration with National Council for Science and Technology Communication under the Department of Science and Technology New Delhi and MP Council of Science and Technology Bhopal. So let me start with our today's kit. So week long celebration में इस नेशनल मैथमेटिक्स डे की जो कि 22 दिसंबर को था, हमने सबसे पहले इनॉग्रेट किया, जो कि मैं सभी को बताता हूँ. हमने इनॉग्रेट की थी एक आई मस्ट से इनॉग्रेशन तो हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले किया था जिसका नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जिसको सर श्रीनिवासा रामानुजन पर. तो वो एग्जीबिशन ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं. उसमें एक बहुत ही अच्छा लेक्चर भी दिया गया था, एक बहुत ही अच्छी टॉक थी हमारे डायरेक्टर श्री शिव प्रसाद खनिज सर के द्वारा, जो कि नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में डायरेक्टर हैं. आप वो भी देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है. तो इस वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन में ढेर सारे
सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे गए, जिसमें शामिल थे आपकी वर्कशॉप ऑन ट्रायंगल्स, वर्कशॉप ऑन सर्कल्स, वर्कशॉप ऑन ज्योमेट्रिक शेप्स एंड इट्स मॉडलिंग, एंड नन अदर देन जो आज के दिन हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन फन विद हाइपरबोला एक्रोबैटिक स्टिक। तो एक्रोबैटिक स्टिक जो है वो हमारी फन साइंस गैलरी में रखा हुआ एक ऐसा एग्जिबिट है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इसमें जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने एक्रोबैटिक स्टिक एग्जिबिट की इमेज डाली हुई है और राइट हैंड साइड पर मैंने किट की इमेज डाली हुई है, जो आप आज की इस क्लास में बनाना सीखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। तो हाइपरबोला और इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो मैं उसके बारे में हमारे साहू सर बात करेंगे, मैथमेटिकल जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। मैं यहाँ पर आपको थोड़े से एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर उसके बारे में हम बात करेंगे, इस किट में क्या हो रहा है, इस एग्जिबिट में क्या हो रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाऊंगा और थोड़ी सी इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करने पे डिटेल जानकारी के लिए हम लोग इसको शेयर करेंगे, आप इसको बात कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए तो अभी क्या है कि अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मेरी स्क्रीन पर आपको एक एग्जिबिट दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एक्रोबैटिक स्टिक, जो कि हमारी आज की वर्कशॉप भी है। आप इसको देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखिए, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा ही रखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट पर एक बीच में बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है और लेफ्ट और राइट पर एक कर्व सा बना हुआ है, जो कि सिमिलरली है कैसा हाइपरबोला जिस तरह से आपका दिखाई देता है, बहुत से लोगों ने बताया भी। और एक स्टिक लगी हुई है। तो ये सबसे बड़ी तो आश्चर्य की बात ये है, यहाँ पर आपको देखना क्या है कि ये जो क्रॉस स्टिक है, ये जो एक सिंपल स्टिक सी लगी हुई है, क्या वो कर्व पाथ को बिना टच किए पूरी तरीके से घूम जाएगी, पूरी तरीके से पार कर जाएगी? इज इट पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्टिक टू टेक अ राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व्ड रीजन, जो कि एक कर्व्ड रीजन जो बन रहा है उसमें आप क्या बना, उसके लिए पॉसिबल है वो जो पाना? पूनम ठाकुर जी, आप जल्दी से अपना डिटेल यहाँ पर शेयर करके हमें हमारे YouTube चैनल पर ज्वाइन करिए प्लीज़। आप हमारे YouTube चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ पे सारी डिटेल्स को शेयर करिए, अपना नाम, आप किस क्लास में है और कहाँ से आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्लीज़। पूनम ठाकुर जी, जल्द से जल्द हमें हमारे YouTube चैनल पर ज्वाइन करिए और वहाँ पे अपनी डिटेल, अपना क्लास, अपना नाम और अपना प्लेस कहाँ से आप पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारे साथ साझा करिए प्लीज़। तो ये मैं कह रहा था कि यहाँ पर एक कर्व रीजन से एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्टिक को, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो इस कर्व रीजन से किस तरीके से पास करेगी, इज इट पॉसिबल? तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम जस्ट करके देखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट माई कॉलीग राहुल टू प्लीज प्ले द वीडियो सो दैट वी कैन सी।
Sir, you are Atishay, please join us on our YouTube channel. Leave the meeting from here and join on our YouTube channel. ओके सो आप लोगों ने जैसा देखा कि अभी यहाँ पर जो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो धीरे चल रही हो, मे बी सम ड्यू टू ग्लिच इन नेटवर्क मे बी, तो उसको छोड़ देते हैं। बट आप लोगों ने यहाँ देखा कि किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट जो स्टिक है वो एक कर्ड यानी कर्ड स्लिट से, जो स्लिट्स यहाँ पे जो हाइपरबोलाइड स्ट्रक्चर में, हाइपरबोला के स्ट्रक्चर में बनी हुई है, वो कैसे कर्ड स्लिट से वो स्टिक पूरी पास होती हुई आप लोगों ने यहाँ पर देखा। और उसी राइट में आप एग्जिबिट भी देख सकते हैं। यहां पर जब आप इस सीडी को रोटेट करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड में जो किट आपको दिखाई दे रही है, उस पे सीडी को जब आप रोटेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो कर्व्ड रीजन है, कर्व्ड रीजन से किस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट स्टिक पूरी तरीके से पास हो जाती है। ये आप एक्चुअली यहां पर करके देख पाएंगे, जैसा कि जिस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। और ये एक एग्जिस्टिंग एग्जिबिट है हमारी फन साइंस गैलरी का, तो आप यहां पर आकर के अब हम इसको देख भी सकते हैं और इसका आनंद भी उठा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट और भी है कि हमारा साइंस सेंटर 10 नवंबर से ऑलरेडी ओपन हो चुका है फेस बैनर में, तो आप यहां पर आकर के लाइव में भी इस एग्जिबिट को देख सकते हैं। हम यहां पर वर्कशॉप में आपको बता ही रहे हैं। तो अब इसके ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं मूव करूंगा अपने थोड़े से डिजिटली प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए कि किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। सो आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी पेंट की। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो मैं बताऊंगा कि आपको इस किट को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेस रहेगा। एक बेस में आपको यहाँ पर एक बेस ले लेना है, ये बेस लेना है, और बेस के ऊपर एक छोटा सा और उसको सपोर्ट करने के लिए जो गियर अरेंजमेंट्स हैं, वो सारे गियर अरेंजमेंट्स को आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये एक चीज करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट है। रेक्टेंगुलर शीट में जो बेसिकली जो हाइपरबोला बना, वो हाइपरबोला बना कैसा है, सॉरी वो जो स्लिट्स बनी कैसे हैं, जिस स्लिट से आपकी स्टिक पास हो रही थी, वो बेसिकली इंटरसेक्शन है दो चीजों का, बीच में रखे हुए ट्रांसपेरेंट प्लेन का, जो कि हमें एग्जिबिट में दिखाई दे रहा था। अगर मैं फिर से इसको दिखाने की कोशिश करूं, ये इस एग्जिबिट के सेंट्रल पार्ट में एक रेक्टेंगुलर प्लेन, एक रीजन रखा हुआ है, एक प्लेन रखा हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट है, तो वो उसको उसका और हाइपरबोला के इंटरसेक्शन से आपको ये स्लिट्स आपको मिलती हुई दिखाई देंगी, ये स्लिट्स आपको मिलती हुई दिखाई देंगी हाइपरबोला और इस रेक्टेंगुलर रीजन से, जो कि एक प्लेन है। Prabhanshu, I request you to please join us on our YouTube channel. The class is already on air on our YouTube channel, so please leave this meeting from here and join us on our YouTube channel. So तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से, अभी मैं इसको अगर शिफ्ट कर दूं तो यस, तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर आपका एक बेस है, बेस में जो गियर एंड जो मैकेनिज्म है वो अभी आपको बताया जाएगा थोड़ी देर में। जस्ट मैं थोड़ा सा डिजिटली कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक हाइपरबोलाइड स्ट्रक्चर बना रहेगा, आपकी जो सेंट्रल में जो प्लेन रहेगा, ये कुछ इस तरह से आपको बना रहेगा। ये अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करूं, कुछ मिलता जुलता मैंने हाइपरबोला बनाने की कोशिश किया है, जस्ट केवल आपको दिखाने के लिए, और ताकि आप इजीली समझ पाए कि आखिर हो क्या रहा है वर्कशॉप में, क्या चीजें चलाई जा रही। तो ये आपका बीच में जो एग्जिबिट है या हमारी जो किट है, अगर आप किट को भी देखेंगे तो किट में ये जो व्हाइट रीजन है ये आपका प्लेन सरफेस है, और एग्जिबिट में अगर आप देखेंगे तो वो आपका ट्रांसपेरेंट रीजन है। ओके, सो उसके बीच में यहाँ पर एक कुछ स्टिक रखी हुई है, एक सिंपल स्टिक है, और यहाँ पे कुछ मूविंग है, ये
इसको अगर मैं रेड कर दूं तो ये स्टिक है। अब ये स्टिक क्या कर रही है, इस तरीके से घूम रही है कि ये जो हाइपरबोलाइड वेव है, जो ये आपका स्लिट्स बनी हुई है, जो स्पेसिंग बनी हुई है, वो उससे ये जो रेड कलर की स्ट्रेट लाइन है, ये जो रेड कलर की स्टिक है, ये क्या कर रही है, ये आसानी से उससे पास कर, घूम करके पास कर। ये देखने में तो बड़ा कठिन सा लग रहा है कि कभी होगा नहीं, बट आप जब इसको एक्चुअली करके देखेंगे तो ये जो स्टिक है, ये जो रेड कलर की स्टिक है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी तरीके से उसमें कर्व से घूम करके क्या करती है, पूरा एक राउंड लेकर के बाहर आ जाएगी। ये आप इसमें आसानी से इस एग्जिबिट पे भी देख सकते हैं और इस किट पे भी देख सकते हैं, और मैंने आपको यूट्यूब के हमारी एग्जिबिट के वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। तो अब बात करते हैं आखिर ये लाइन क्या है। तो मैं जान सकता हूं क्या कि हमारे यूट्यूब पे जो हमें दर्शक देख रहे हैं वो अगर हमें बताएं कि ये जो लाइन है, क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, क्या है ये लाइन? मेरे ख्याल से कुछ मैं कमेंट्स यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरी वॉइस नहीं आ रही, बट आई एम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द चैनल, यूट्यूब चैनल ऑन फ्रॉम आवर रिसोर्सेज एज वेल। सो आई होप कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। Yes, my voice is clear. Yes, विनायक मनी त्रिपाठी हैज टेक्स्टेड एसिम्प्टोट। वेरी नाइस विनायक। और भी लोग अगर बताना चाहें तो और भी एसिम्प्टोट कहेंगे। यस, वेरी नाइस एसिम्प्टोट। यस सर, ओके, थैंक यू। शशांक दीक्षित एसिम्प्टोट, टोड्स एसिम्प्टोट, मे बी शशांक हैज मिसस्पेल्ड इट्स एसिम्प्टोट्स और ओके sir, you are audible. Thank you Shashank, thank you, you are absolutely right. Thank you Vinayak, thank you everyone, thank you very much. ओके, सो ये हमारा एग्जिबिट है, ये हमारा क्या है, एसिम्प्टोट है। तो एसिम्प्टोट की अगर बात करें तो एन एसिम्प्टोट इज ए स्ट्रेट लाइन दैट कंस्टेंटली अप्रोचेस अ गिवन कर्व बट डज नॉट मीट एट एनी इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब एक कर्व के साथ साथ चलने वाली एक ऐसी लाइन होती है कि जो लगेगी कि मीट कर रही है बट वो कभी मीट करेगी नहीं। अप्रोचेस अ गिवन कर्व बट डज नॉट मीट एट एनी इनफाइनाइट डिस्टेंस। और एंड इनफाइनाइट पे अगर कोई पॉइंट है तो वही एसिम्प्टोट उसके लिए क्या करेगी, टेंजेंट का काम करेगी। और सरल भाषा में अगर कहूं तो इन एनालिटिक, इफ यू फॉलो द विकिपीडिया और मैथमेटिकल डेफिनेशंस एज वेल, देन इन एनालिटिक ज्योमेट्री एन एसिम्प्टोट इज ऑफ अ कर्व इज अ लाइन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड दैट लाइन अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोचेस जीरो। यानी एक ऐसी लाइन होती है किसी भी कर्व के लिए, एक ऐसी लाइन होती है किसी भी कर्व के लिए जो उनके डिस्टेंस की, उनके बीच की जो डिस्टेंस क्या करती है, अप्रोच करती है जीरो। कब? As one or both of the x और y coordinates tends to infinity। जब उनके x और y कोऑर्डिनेट्स में से कोई एक या कोई दोनों अगर जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करते तो उनकी जो बीच की डिस्टेंस है, उनके जो बीच की डिस्टेंस है उस लाइन और उस कर्व की, वो जीरो को अप्रोच करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट एसिम्प्टोट। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पर ये जो लाइन है, आपको जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, दिस इज वर्किंग एज एन एसिम्प्टोट। तो ये यहाँ पर अब आपको बनाना है। और मैं फिर से अगर मूव करूं अपनी एग्जिबिट, अपने किट की तरफ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमने जो हमारा जो एक बड़ा सा मॉडल है एग्जिबिट का, उसको अगर आप देख पाएंगे तो आपने देखा होगा कि डमरू जो बने होते हैं वो भी लगभग हाइपरबोला स्ट्रक्चर के बने होते हैं। कुछ बेत की बनी हुई सीट्स होती हैं जो, उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें स्टिक को घुमा करके एक हाइपरबोलाइड स्ट्रक्चर, स्टिक को घुमा करके हाइपरबोलाइड स्ट्रक्चर दिया जाता है। कूलिंग टावर्स को अगर आप देखेंगे तो वो भी हाइपरबोलाइड स्ट्रक्चर्स में आपको, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाई देते हुए मिल जाएंगे। तो और ये जो किट आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो आज आप बनाएंगे, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि बीच में ये जो है ये एक प्लेन है और यहाँ पर एक स्टिक है जो कि इसकी तरफ घूमती हुई दिखाई, आसानी से घूम जाती है। सो ये, और एक क्वेश्चन और मैं साथ ही साथ पूछूंगा, इसके बाद मैं साहू सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कंटिन्यू करें। देयर आर टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो यहाँ पर जो एसिम्प्टोट बन रही है वो किस टाइप की है, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। जल्दी से हमें यस सर, ढोलक, यस वेरी नाइस। तो ढोलक भी उसी शेप में, ढोलक
आई एम नॉट श्योर कि उसमें कई तरह के होते हैं, इसलिए आई एम नॉट श्योर, बट जल्दी जल्दी आप हमें बताइए कि ये जो एसिम्टोट यहाँ पर है वो किस तरह की एसिम्टोट है, जल्दी से हमें चैट बॉक्स में बताइए। बाय द टाइम अब हम मूव करेंगे अपनी आज की इस प्रेजेंटेशन, जिसमें आप हाइपरबोला, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में आप इसमें समझने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस मच पार्ट ऑफ द सेशन द डिजिटली, जिसमें आपको बताने की कोशिश की गई। तो ये रहा मेरा, फिर से एक बार मैं प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ बनाना है, यहाँ पे इस तरह के कर्व आपको रेक्टेंगुलर शीट पे बनाना होगा, और साथ ही साथ अगर जो लोग हमारे साथ कार्डबोर्ड शीट या जो प्री रिक्विजिट्स हैं अगर आप रखे हुए हैं तो प्लीज आप हमारे साथ बनाते भी चलिएगा। तो बीच में कुछ एक क्लैंप रहेगा जिसकी मदद से ये जो रेड लाइन है, जो रेड स्टिक है, ये पूरी तरफ, ये दोनों तरफ घूमेगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। Sarita Singh ji is asking which kind of asymptote was what is the question। तो मैंने ये पूछा था कि there are several types of asymptotes, तो यहाँ पे जो asymptote बन रही है वो कौन सी asymptote है। मुझे कुछ questions के कुछ जवाब भी आ गए। दिव्या शर्मा, yes you are right, और बहुत सारे लोगों ने मुझे yes, प्रभांशु मिश्रा, yes very good। so बहुत सारे जवाब भी मुझे मिल रहे हैं, thank you very much। now with your permission and मैं shift करूँगा इसके डिस्क्रिप्शन पार्ट की तरफ। सो थैंक यू वेरी मच। ओके साहू सर प्लीज। शुरू से अच्छा चल रहे हैं, अच्छा ठीक है। Good afternoon children, now I will take over the program and continue for another 1 hour or so. Hello. Yes, we are live now. Sorry for the problems. Maybe some issues related to internet we have been facing, but I think it is all right. So अभी जो लोग सुन पा रहे हैं, प्लीज जल्दी से हमें ज्वाइन कर लीजिए। वी आर बैक। सभी लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और जस्ट टेक्स्ट मैसेज से बताइए इफ यू कैन लिसन अस। आई होप आप सभी लोग अगर सुन पा रहे हो तो माफ़ी चाहूँगा इस प्रॉब्लम के लिए, कुछ शायद इंटरनेट रिलेटेड इशू आ गए थे। आई रिक्वेस्ट माई कॉलीग टू प्लीज चेक ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। वी आर लाइव। सो रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम की वजह से शायद कनेक्शन लूज हो गया था। अब अभी सुन पा रहे हो तो जस्ट प्लीज़ गिव अस अ हिंट यूजिंग आवर चैट बॉक्स सो दैट वी मे कंटिन्यू। ओके
Sarita ji, yes ma'am. Okay, yeah, now we will work. Okay, thank you very much. So मे भी शायद कुछ इंटरनेट को लेकर के प्रॉब्लम आया था, उसके लिए माफी चाहूंगा, बट वी विल कंटिन्यू द क्लास. सो यहाँ पर मैंने आपने को बताया कि आप जो देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एग्जिबिट है और राइट हैंड साइड पे हमारी किट है. तो इसको आप देख पाएंगे, इसको आप कर पाएंगे. तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम वी विल स्टार्ट द वर्कशॉप, वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम, मतलब रिज्यूम द प्रोग्राम. है मैं कि बहुत सारी चीजें मैंने शुरुआत में आपको बताई भी होंगी, वो आप देख सकते हैं. तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, राहुल प्लीज ऑन कर दीजिए. एंड आई रिक्वेस्ट माय कलीग साहू सर टू प्लीज स्टार्ट प्रेजेंटिंग द पीपीटी. एंड और बाय द टाइम मैं अपने जो हमारे जो साथी शिक्षक साथी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इवन जो टीचर्स या कोई भी जो हमें देख पा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे साथ बनाते चलिए साथ ही साथ, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा. तो आप साथ ही साथ किट को बनाते भी चलिए. ये साहू सर, यू मे प्लीज कंटिन्यू. Okay, good afternoon, dear children. I will take over the program and will continue the program for another 1 hour or so. Topic this afternoon today is properties of hyperbola. I think you have already been briefed about what is hyperbola all about, and you have been shown an exhibit related to hyperbola that is housed in our gallery. You have found how a straight stick is moving around and passing smoothly into a curved slot without touching any of the walls of the slot that we have already seen during the short clip of video that we have displayed for you. Now, I would like to discuss some of the basic properties of hyperbola. In my presentation today, not only I will discuss some of the basic properties of hyperbola, but also I will show you some practical applications of hyperbola in our daily life. Okay, so this is the topic today. Properties of hyperbola. I hope that you will be with us throughout the program, and this program will enjoy the program. Okay, let's continue now. Okay, so hyperbola is basically conic section curves. What is a conic section? The very word conic means it is derived from a cone. Okay, we should have a right circular cone, perhaps a right circular cone with a plane at different angles. Then on the cross section we will find different curves being generated. Okay, so there should be two objects should undergo intersection, right circular cone and the plane, and at the intersection we should get three curves, which are basically called the conic section curves. So what are the three conic section curves? One is the ellipse, other is the parabola, and other is the hyperbola. Okay, in my presentation today, I will not be discussing more about ellipse and parabola. Rather, I will be restricting my discussion to hyperbola only. But before that, for your knowledge, let me tell what is an ellipse and what is a parabola. There are showing entire hyperbola. Ellipse is a closed curve. You will find orbits of most planets are elliptical in shapes. Okay. Orbits of most Earth satellites around the Earth are elliptical in shape. There are many instances of the application of ellipse in our daily life in a practical purpose. There are some elliptical halls, okay, which are basically called the whispering halls or whispering cathedrals. So ellipse has 2 points, 2 foci. If we'll stick at one of the points inside the hall, then it will be reflected from the elliptical walls. It will be converging at other focal point, and if some listeners are present at the focal point, they can be easily listening to our whisper. Okay, so based upon this interesting property of the ellipse, whispering halls have been devised. Okay, there are some elliptical cannon boards. So there are many applications of ellipse in our daily life. If you talk about a parabola, normally the dish antenna that you find in the rooftop to receive a signal a parabola in shape. Okay, so this antenna parabola is there. We'll not be talking much about parabola and ellipse, but rather we'll be discussing our entire
content of this program to hyperbola only. So to remind you, hyperbola is nothing but a conic section. It is section derived from the cut section of a cone. It should be right circular cone. And there should be a plane coming and cutting across the cone at different angles. In that case, only at the intersection, we will find three different curves generated. These curves are known as hyperbola, parabola, and ellipse. So I'll be talking today. I'll be focusing my entire attention today to the properties of hyperbola only. So I will switch over to the next slide. So whatever thing I've told you in the previous slide that has been displayed in diagrammatic form, in this slide only, please look at the figure number 1. A plane is coming and cutting across from the sides of the right circular cone. There are two cones placed one above the other at their vertices. A plane is coming and cutting across from the curved wall of the bottom right circular cone. Then at the intersection where we get a cut, the intersection basically, contour of that intersection basically looks like a parabola. So if a plane cuts a right circular cone at an angle in a tilted manner, from the walls of the right circular cone, we'll be getting a hyperbola at the intersection. Okay. Now, if we have a plane and that plane will cut across the right circular cone entirely, it will pass from one end of the right circular cone and will enter and will come out from the right circular cone. The plane will cut in an entire manner. In that case, if the plane is cross section, we will get a circle, not an ellipse. If the plane is parallel to the base of the cone, at the cross section we will get a circle. But circle is a special case of the ellipse, mind you. That's why we have not considered circle in the conic section curves, because circle can be regarded as a special case of the ellipse. Okay, but if we have a plane that will cut across the right circular cone at an angle, then look at the figure 2, we'll get at the cross section an ellipse. Okay, so this is how an ellipse can be generated, by intersecting a plane with a right circular cone. Then figure number 3 is most important pertaining to our presentation today. We have two right circular cones placed one above the other at their respective vertices. Then we have a plane indicated by purple color. The plane is cutting across the two cones vertically. The plane is cutting across the upper cone. The plane is also cutting across the lower cone vertically. Then we'll get two branches. We'll get two curves. The two curves are nothing but the two branches of a hyperbola. So here, how by cutting across a right circular cone with the plane at different angles, at different orientations, in different fashions, we'll be able to produce the three conic section curves. We are not talking about the circle, because circle is a special case of the ellipse. If you have a plane cutting across the right circular cone at an angle, then the plane will pass through one of the curved walls of the right circular cone, and the plane will emerge at the base. Okay, look at figure 1, that is a parabola. Then if you have a plane, tilted plane cutting across the right circular cone, then the cross section will be ellipse. Then if we have a plane cutting across the two cones placed one above the other in a vertical manner, we'll be getting two branches, and the two branches will form the two branches of the hyperbola. So this is how the three conic section curves are generated by cutting a right circular cone with a plane. But we will be focusing our entire attention this afternoon to hyperbola only. So what is the basic definition of a hyperbola? So the statement says hyperbola is an open curve. Hyperbola is never a closed curve. Unlike a circle or an ellipse, which are closed curves, hyperbola is an open curve with two branches. A hyperbola essentially has two branches. It is an open curve, and these are produced
the intersection of a plane with both halves of a double cone. If you have a double cone, that means there are two cones. The cones must be right circular ones. One cone must be placed above the other, and they must be supported at their respective apex, respective to the vertices. Then we will have a double cone. Okay. So the intersection of a plane with both halves of the double cone, the plane must intersect both the cones. Okay, not just a single cone. If the plane would intersect a single cone, then we'll get only one branch of the hyperbola. But the hyperbola is never complete without the two branches. So the plane must cut both the cones, both the halves of the double cone in a vertical manner. In that case, the intersection, a hyperbola will be generated. Hyperbola is a plane curve, plane and open curve. Now, but there is some another definition of hyperbola which is very, very important. Okay. What is that? A plane curve generated by a point. So moving that, the difference of the distances from two fixed points is constant. In coordinate geometry, we will come across this definition. Okay. So hyperbola is the path of a moving point. So that the difference of the distances from two fixed points is constant. Suppose we have two fixed points, f1 and f2. These are called the foci of the hyperbola. Foci is a plural term, foci. If we convert that into singular term, it will be focus, focus. Okay. So a hyperbola has two fixed points, f1 and f2, two foci. Okay. Suppose you have a point P1 located on the hyperbola P1. Okay, the distance of P1 from one of the focus F1 is P1 F1. The distance of the same point P1 from the other focus is P2 F2. What is the difference in their distances? It is P1 F2 minus P1 F1. Okay. Suppose the point moves to another location, to P2. Then P2 F1 is the distance, is one of the distances. P2 F2 is the other distances from their respective fixed points. Then again the difference in the distances is P2 F2 minus P2 F1. Okay, those two distances must be same if the point has to lie on the hyperbola. If the point moves to another location P3, then the difference of the point from the two fixed points are is P3F1 minus P3F2. So I've shown you three distances. I've shown you three moving points, P1, P2, and P3. I've shown you two fixed points, F1 and F2. And the difference of the distances of the moving point from two fixed points in three cases have been shown. One is P1 F2 minus P1 F1. Other is P2 F2 minus P2 F1. Other is P3 F1 minus P3 F2. In all these cases, the difference of the distances of the moving point from two fixed points must be same if the point has to lie on the hyperbola. So this is the essence of the very definition of the hyperbola, that says it is a plane curve generated by a point so moving that the difference of the distances from two fixed points is a constant. The two fixed points are called the two foci of the hyperbola. The hyperbola should have two foci. An ellipse also has two foci, but a parabola has one focus. A circle doesn't have any focus. The two foci of the ellipse approach each other and mingle at the center. In that case, the shape will become a circle. But a hyperbola should have two foci. So, in my presentation up to this point of time, up to this part, I've told you that hyperbola is a conic section curve, and the definition from a coordinate geometry point of view is that it is a plane generated by a point, so moving that the difference of the distances from two fixed points is a constant. This is a very important definition of hyperbola. Please to remember that. Okay. What are different elements of hyperbola? Okay, sometime back you have been asked a question on asymptote. What is an asymptote? Okay, now what are the other elements of hyperbola? Like a circle is having a very important element that we call the center. Okay, radius are there, diameter is there, circumference is there,
Okay, arc is there, sector is there. But what are the same things about a hyperbola? Okay, hyperbola should have a center. Okay, hyperbola should have a semi-major axis. A hyperbola should have a linear eccentricity denoted by the letter C. A hyperbola should have an eccentricity. All the conic section curves should have eccentricity. Eccentricity is nothing but C by A. Okay. So what is semi-major axis? Semi-major axis is nothing but the distance from the center to one of the points of the hyperbola where it cuts this horizontal axis. This A is the semi-major axis. Okay. The linear eccentricity, the focal distance, is the distance of the hyperbola from the center to one of the focal points, indicated by green lines. This is the eccentricity, linear eccentricity, or focal distance, C. Please observe that C is more than A. So C, the ratio of C by A, which we call as eccentricity, C by A must be greater than 1. So for a conic section curve, whose eccentricity is greater than 1, that is a hyperbola. All right. Now I'll define all these points, all these elements. First, because F1 and F2 are the two fixed points, are the focus of the hyperbola. So what is that? They are the 2 points that define the hyperbola and called foci together. Okay. as you require the center as our foremost requirement to construct a circle, similarly, to construct a hyperbola, we need 2 fixed reference points. These are the foci. Foci is a plural term, and the singular term is focus. So they are the 2 prime requirements for us to construct a hyperbola. Okay. What about the center? Center is the intersection points of the transverse axis and conjugate axis. Okay. In below, we'll be defining what is a transverse axis and what is a conjugate axis. Okay. Look at the figure here. The horizontal axis is called the transverse axis. The vertical axis we have not shown here, that is the conjugate axis. So the point where these 2 axes meet together, that should be called a center. Okay. Also, the center can be defined at the midpoint of the line which join the 2 foci. Look at the figure again. F1 and F2 are the 2 foci of the hyperbola. If you join the 2 foci with the straight line, then the midpoint of the straight line joining the 2 foci will be called the center. Okay, so this is the center of the hyperbola. Now, what are the 2 axes of the hyperbola? First of all, this is the transverse axis, another is the conjugate axis. What is transverse axis? Transverse axis is a line passing through the foci and also called the major axis of the hyperbola. Okay, so transverse axis, this horizontal axis is the transverse axis, it's also called the major axis. This axis is defined by joining a line connecting F1 and F2. The 2 focal points will be connected, and the line that we will be getting, that is the transverse axis or the major axis. Okay. Similarly, a line conjugate axis, a line perpendicular to the transverse axis and passing through the center of the hyperbola is called the conjugate axis. The conjugate axis must be a line passing through the center of the hyperbola and should be perpendicular to the transverse axis. Conjugate line axis has not been shown here. Okay, if you draw a line like this passing to the center, perpendicular to the transverse axis, then we'll get the conjugate axis, right? The point wherever these 2 axes will meet, that will define the center of the hyperbola, right? Now, vortex. Vortex is the intersection with the transverse axis at 2 points can be termed as the vortices of the hyperbola. Okay, please look at this figure. The 2 branches of the hyperbola being drawn. Okay, this is one branch on the left hand side, this another branch on the right hand side, indicated by the red color, and the dotted line indicate the transverse axis. So the point wherever the hyperbolic curve meets the transverse axis, it meets at 2 such points. Okay, these are the vortex points. Okay, so this is one of the vortices. Vortices is a plural term, vortex is a singular term. This is a vortex. Here is the point where the hyperbola meets the transverse axis. There is another point on the left hand side where the hyperbola, the other branch meets the transverse axis. So the points
where the hyperbola meets the transverse axis is called the vortex of the hyperbola. So in our slide, in this present slide, we have defined some 5 important terms related to hyperbola: focus, the center, the transverse axis, the conjugate axis, and the vortex. Now we'll be moving to the next slide. Property of the hyperbola. The first property is that all hyperbolas have 2 branches. A hyperbola is never complete without 2 branches. If you draw just a single branch only, that will be an incomplete hyperbola. Okay. So hyperbola should essentially have 2 branches. Each branch should have a vortex and a focal point. That's very, very important. Number 2, all hyperbolas have asymptotes. In our case, what is asymptotes? Asymptotes are basically straight lines that form an X figure that the hyperbola approaches but never touches. If you look at this figure, a straight line is an asymptote. Okay, the straight line tends to approach the hyperbola. It becomes closer and closer to the hyperbola as it approaches more and more, but never meets the hyperbola. An asymptote never theoretically meets an hyperbola, and theoretically an asymptote meets the hyperbola at infinity. So hyperbola is a straight line that approaches the hyperbola but never meets. In that case, we'll get that we can call this straight line as asymptote. For hyperbola, there are 2 such asymptotes, 2 such straight lines. And when both the straight lines, when both the asymptotes meet together, they will become an X figure. So, property number 2, all hyperbolas have asymptotes, which are basically straight lines that form an X figure that the hyperbola approaches but never touches. Property number 3, all hyperbolas have an eccentricity value greater than 1. Okay. What is eccentricity? Look at this figure. Eccentricity is nothing but the ratio of C and A. C upon A is eccentricity. Okay. C is the focal distance at the fixed point from the center of the hyperbola. A is the semi-major axis, right? So, semi-major axis small a is defined by this blue color line. Then focal distance is defined by this green color line. You will observe that focal distance is more than the semi-major axis, that is C is greater than A. So the ratio of C and A, C upon A, eccentricity is greater than 1. For a hyperbola, eccentricity is greater than 1. For a ellipse, the eccentricity is exactly equal to 1. For a parabola, eccentricity C by A is, for an ellipse, it is less than 1. Eccentricity is less than 1. For a parabola, the eccentricity C by A is exactly equal to 1. For a circle, the eccentricity is 0. So depending upon the values of the eccentricities, we can get different curves, correct section curves. If the eccentricity is greater than 1, we will get a hyperbola. So these are the 3 properties defined, 3 very important properties defined pertaining to a hyperbola. First of all, the hyperbola should have 2 branches, each with a vortex and a focal point. Second, all hyperbolas have an asymptotes. Third, all hyperbolas than 1. Okay, here we have defined some more properties of a hyperbola. This property is called focal property. Okay, the difference of the focal distances that already have defined. The difference of the focal distances for any point on the hyperbola is constant. That is PS minus PS dash. Okay, we'll take a modulus of that, a constant. We'll disregard the sign. We'll take on the absolute value, will be constant. If the lengths of the transverse axis and the conjugate axis are equal, then the hyperbola that we'll get will be called a rectangular hyperbola. Okay, this is a special case of hyperbola when the transverse axis and conjugate axis are same. That is, when both the semi-major axis and semi-minor axis are same, then we will get a rectangular hyperbola.
Okay, if you have a point x1 and y1 lies exactly on the hyperbola, then x1 square minus x1 square upon a square minus y1 square upon b square, okay, is 1. Let's read the full statement. The point x1, y1 lies within, on, or outside the hyperbola if the quantity x1 square upon a square minus y1 square upon b square minus 1, okay, is positive. If it is positive, then the point will lie within the hyperbola. If it is 0, the point will lie on the hyperbola. If it is negative, the point will lie outside the hyperbola. So these are some of the additional properties of a hyperbola. Now, in my subsequent slides, I'll be telling you some of the practical applications of a hyperbola. The practical applications of hyperbola, I've given few instances. You can find many instances in your daily life. Over the net, you can search and get many instances of applications of hyperbola in your day-to-day life. But the instances that I've chosen to share with you is a hyperbolic sundial. Hyperbolas are also used in navigation purpose for locating position of a ship in the sea. The path followed by an atomic particle in an atomic reactor is a hyperbola. The shape of the cooling towers used in nuclear reactors is also a hyperbola. The sonic booms, the supersonic jet planes that leave sonic booms, the sonic booms are also basically hyperbolic in shape. The gear transmission, we use certain gears in the machines for transmitting motion from one part to the other part of the machine. Some of the gears are hyperbolic in shape. And the lamp set. Suppose we have a lamp, bed lamp, and a lamp set. You have a set. Lamp set is also hyperbolic in shape. Now elaborate on each of these applications. First of all, hyperbola is in sundial. What is a sundial? Sundial is a device, is a simple device consisting of two different parts. One is the gnomon that will cast the shadow, other is the dial that will receive the shadow. As the sun moves in the sky, the position and the distance, position and length of the shadow changes from time to time, but the tip of the shadow moves along a particular curve throughout the day. So here we have the sundial. This is a gnomon. This is the device that will cast the shadow. The sun moves across the sky throughout the day. Then this is the tip of the shadow. If you observe the tip of the shadow throughout the day, that will trace a particular curve, and that curve is a hyperbola. So I've written here in practical term the shadow of the tip of a pole. Okay, no one is also called the pole. It traces out a hyperbola on the ground over the course of a day. So to determine the time, local time, sundials will indicate the local time. We have to calibrate this particular hyperbolic curve in terms of hours, minutes, and seconds. So depending on the position of the shadow on this calibrated hyperbolic path, we can determine the local time. So this is the basic principle of operation of a sundial. Okay. Hyperbola in navigation. A ship can locate its position from the difference in arrival times of signals from two GPS transmitters. Yes, to locate the position of a ship in the infinite sea. Again, properties of hyperbola has to be taken advantage of. Okay, look at the figure. The blue shade represents the sea, and the yellow is set represents the shore. Okay, so there is a ship in the seas indicated by P. Then there are two GPS transmitters. One indicated by A on the shore, the other transmitter indicated by the letter B on the shore. And that separating distance between the two GPS transmitter is 400 miles. 400 miles. Okay, quite a long distance. And these GPS transmitter are sending stations. They'll send radio signals. Okay, and the ship, the receiver located on the ship will receive the two signals. One coming from transmitter A, the other coming from transmitter B. Please to observe that the transmitter B is closer to the ship.
than the transmitter A. So the signal sent by the transmitter B will reach the ship first, and the signal sent by transmitter A will reach late. It will have some delay. So there will be a difference of times, difference of reception times of the two transmitting signals from the two transmitting stations as received from the ship. Okay. So by calculating the difference in the times of the reception of the signals from two different sending stations, okay, by calculating the difference of the times, we can plot the path of the ship. We can say that the ship is at any point on the branch of a hyperbola. Okay, so the instantaneous position of a ship can be regarded as on one of the branch of a hyperbola, and that hyperbola will be constructed with all its key elements like focus, center, axis. The hyperbola will be constructed, and based upon the construction of the hyperbola, the position of the ship on the branch of the hyperbola can be calculated. It is a very important application of hyperbola in navigation. A ship can locate its position from the difference in arrival times of signals from two GPS transmitters. Shapes of cooling towers of nuclear reactor. A nuclear reactor generates enormous amount of heat. Okay, and this heat must be dissipated quickly. So cooling towers are essential to dissipate the tremendous amount of heat generated in a nuclear reactor. Okay, if you won't dissipate tremendous heat generated in a nuclear reactor, then all our nuclear devices will be burned out. The cooling towers are basically hyperboloid in shape. The hyperboloid is the standard design for all cooling towers. Look at the cooling towers. Okay, the cross section of the cooling towers is hyperbola in shape. And the solid hyperbola, if we rotate a hyperbola about a vertical line, we will get a solid figure. That is called a solid hyperbola or hyperboloid. The cooling towers are basically hyperboloid in shape, and the cross section of this hyperboloid cooling tower is a hyperbola. So why the cooling towers are basically hyperboloid in shape? That is the answer in point number 2. When designing these cooling towers, engineers are faced with two problems. What are these two problems? The structure must be able to withstand high winds. Cooling towers are tall towers. Okay, so they are subjected to high wind. So the structure must be able to withstand high winds. Number 2, they should be built with as little material as possible, because cooling towers are high and colossal structures. So a lot of materials are required. A lot of material construction materials are required to construct cooling towers. Okay, so the design should be such that we would minimize the quantity of the construction materials to design a cooling tower, right? So a hyperbolic shape will meet both the conditions, satisfy both the conditions. If the cooling towers will be hyperbolic in shape, it can withstand high winds, high wind pressures. Not only that, it can also be built with as less as materials as possible. Okay, so for economy of materials, the cooling towers are built in hyperbolic shapes. Okay, this is yet another very important application of hyperbola. Now, path followed by another application of hyperbola is coming. Path followed by an atomic particle is a hyperbola. If the total energy E of the particle is greater than 0, the path of such particle is a hyperbola. This property is useful in studying atomic and subatomic forces by scattering high energy particles. For example, the Rutherford experiment demonstrated the existence of the atomic nucleus by examining the scattering of alpha particles from gold atoms. You must have read about Rutherford's famous scattering, alpha ray scattering experiments. What are alpha rays? Alpha rays are nothing but doubly ionized helium nucleus. Okay, alpha rays are positively charged particles. Okay, look at the figure here. Here is the nucleus of the atom. So here, alpha rays are projected. When when an alpha particle is projected, nucleus is positively charged, which all of the protons of the atom is concentrated at the nucleus.
Then alpha rays are also positively charged particles. When alpha rays are projected, then approaching the nucleus. Okay, so an electrostatic repulsion is it will encounter a repulsive force, which both are positively charged particles. Okay, so at this place, the alpha particles will repulse it. This is the closest approach of the alpha particle to the nucleus. It can't approach further beyond this range. Okay, because it is constantly subjected to repulsive forces. So alpha particle will deviate and pass away along this path. Okay, so if you consider the shape of this path of the alpha particle, the shape of the path is basically hyperbola, and this is called the scattering phenomenon. When alpha particle is projected to the atoms, when Rutherford projected alpha particles to a gold foil, the thin gold foil, he found that some of the alpha particles were scattered. They moved away in hyperbolic paths. Okay. So that suggested that they are being repulsed by uh, some positively charged particles situated within the gold foil. This is termed as the nucleus. So the path followed by an atomic particle is basically the hyperbola. This property is useful in studying atomic and subatomic forces. By scattering high energy particles, the particle must be accelerated to high kinetic energy by particle accelerators. They'll project it with high kinetic energy so that they will approach as close as possible to the nucleus. But when they will approach very close, short range forces will apply, short range strong nuclear forces will come into action, and alpha these particles will be repulsed and follow a hyperbolic path. So these particles should be high energy, highly accelerated particles. And in Rutherford scattering experiments demonstrated the existence of atomic nucleus by examining the scattering of alpha particles from gold atoms. Okay. Now, this is yet another application of hyperbola in nature. Comets and hyperbola. Okay. Comets. What are comets? The comets are solar system bodies, celestial bodies. Okay. Some comets do originate from Kuiper belt in the solar system, short period comets. There are some other comets, the long period comets. They originate from a position called Oort cloud that are located beyond at the edge of our solar system, beyond uh, the limits of a solar system. That's called Oort cloud. So short period comets and long period comets. We have Halley's comets. You must have heard about Halley's comet. That is a medium comet having a medium period. 76 years it will grace our solar system. Okay, so there are different comets having classified into depending upon their periods. But comets, some comets, not all, follow hyperbolic paths. Okay, there are some comets which are periodic comets. I've told you Halley's comet. Halley's comet will come to a sky in every 76 years because it is moving in a closed elliptical path. Okay, the comets which will move in closed elliptical paths that will come again and again towards sky. Halley's comet belongs one such category. It will come and again in every 76 years. Okay, last time it came in 1986. Okay, again after 76 years, okay, you'll be able to see Halley's comet. But unlike a periodic, these are called periodic comets. Unlike a periodic comet, there are some comets which are not periodic. There are some comets which are moving in open paths. Okay, their energy is such they are moving in hyperbolic paths. Okay, so they will approach the sun once in their lifetime and they will go away from the sun, never to return again. So such comets will come to the solar system only for once as they're traveling in an open car. Okay. So if you can see such a comet that will come to our sky only for once, it to never come back again, then you should consider yourself as fortunate because you are seeing a lifetime event, okay, a unique, rare celestial event that will occur only once. Okay, the comet can be seen only for once. After that, it will move away in the open path, never to come again.
we will be never able to see them. Nobody will be able to see them again in their life. They will go to the infinite depth of the sky and disappear from our view forever. So there are some comets which travel in open paths, and these open paths may be a hyperbola in itself. Here the path of the comet has been shown. The sun is located at the focus of the hyperbola, and the path of the comet has been shown. This is a hyperbola. Sonic booms. This is another application of sonic booms. As a supersonic planes moves, it leaves a high energy boom that is called a sonic boom. What are supersonic planes? The planes which will move faster than the velocity of sound. This is supersonic planes. Normally the velocity of sound is 1100 kilometer per hour. Approximately 1100 kilometer per hour. Velocity of sound is 332 meter per second. If we convert that into kilometer per hour unit, it will be approximately 1100 kilometer per hour velocity of sound. There are some planes, fighter planes, that can move more than 1100 kilometer per hour speed. Okay, these planes are called supersonic planes. A supersonic plane moves faster than the speed of sound, and a cone-like wave is produced, and the sound waves that the plane lifts, it produces a cone-like waves. Where the cone intersects the ground, it is an hyperbola. When the cone-like sound waves propagates and intersects with the ground, it is an hyperbola. The sonic boom hit every point on that curve at the same time. No sound is heard outside the curve. Okay, so all our sound energy, all our immediate sound energy is concentrated within that curve only. So energy is highly concentrated. The sonic boom is a region where we get a high concentration of energy. So the sonic boom will meet our houses. It can damage the houses, it can damage the window panes, furniture inside the houses. Okay, so these are the devastating effects of sonic boom. The hyperbola is known as sonic boom curve. So this is a jet plane, supersonic jet plane. It moves, it leaves behind the sonic boom. The sonic boom travels very fast, and meets the ground. The points where the sonic boom will meet the ground, if you join all these points, it will be a hyperbola. This is yet another application of hyperbola. Gear transmission. In machines, you have gears. By gears, we can transmit motion from one part of the machine to the other. We can change the velocity, change the amount of motion. You can change it. You can either increase motion, you can decrease motion. We can also change the direction of the motion from horizontal motion to vertical motion. Okay. So in some machines, hyperboloid gear of revolution can provide gear transmission between two skew axes. The cogs of each gear are a set of generating straight lines. These are the hyperboloid gears. Now, what is a hyperboloid? So far, I have discussed about hyperbola. Hyperbola is a plane curve, but now it is hyperboloid. It is solid figure. Okay, it is solid hyperbola. So, what is a hyperboloid? Hyperboloid is the open surface generated by revolving a hyperbola in space about either of its axes. Okay, so hyperbola is three axes have been shown, right? This is the vertical axis. This is the vertical axis or the transverse axis. Okay, this is a hyperbola curve. If we rotate the hyperbola curve about the vertical axis, this will generate a solid figure, and the solid figure is known as hyperboloid. Similarly, you can get other hyperboloids if we rotate the hyperbola about other axes. The hyperboloid is a solid figure that is generated by rotating the hyperbola about their own axis. Is the open surface. Hyperboloid is the open surface. A hyperbola formed with straight lines. Okay,
we can form a hyperboloid shape with straight lines. Okay. You must have seen some sitting stools over which we sit in a house. These are dumbbell in shapes, dumbbell sakar. Okay, these are made up of canes. The canes are basically straight lines, straight canes. But the straight canes are fitted in such a manner when you look at the entire assembly of the canes, the straight lines, the entire assembly looks like a curve, a hyperboloid curve. So, from by arranging the straight lines in different fashions, we can form a hyperboloid shape. Okay, because straight lines can form a hyperboloid shape, a straight line can easily pass through a hyperbolic slot. Okay, that I'll show you in subsequent slides. Hyperbola in daily life. Okay, I was talking about this sitting stool sometime before. It's made up of canes. You look at the sitting stools. These are straight lines. These are never carved. But the straight lines are fitted in such a manner, the whole assembly, the whole configuration, the whole spatial arrangement looks like a dumbbell shape, looks like a curve, a hyperbolic curve. But this is made up of straight sticks. The sticks are never bent or curved. Okay, so my point is that by arranging the straight sticks in a particular manner in space, will form a hyperboloid curve. Because a straight stick can make a hyperboloid curve, and because a cross section of the hyperboloid curve is a hyperbola, a straight stick can easily pass through a hyperbola. Okay, so this is the kit I like to show you. This kit, look at this kit. This kit we will be taking up today for fabrication. There are these are the two branches of hyperbola. All right, this is a straight stick. We can rotate this straight stick. Okay, the straight stick will enter into one of the branches of hyperbolic slot. It will come out without touching the walls, and then this can again pass through the other branch of the hyperbolic slot without touching the walls. So why is it that? Because straight lines can make up a hyperboloid shape, and because the section of a hyperboloid is a hyperbola, a straight stick can pass through a hyperbola, pass through two branches of the hyperbola. All right. So this kit we will be taking today. What are the materials required? Materials required are a vertical plate having two hyperbolic slots, a straight stick, a CD to rotate the stick or to rotate the hyperbolic slots, then a waste port. Now we'll display our work table. I hope that you must have gone through my presentation. Some of the basics that has not been cleared so far in your minds should have been cleared by now. Now, after having told about the basics, now I'll switch over to my work table to show you the actual kit that we'll be taking up today for fabrication. Okay. Now we'll be switching over to the work table. Thank you. Okay, thank you very much, Sahu sir. Okay, thank you very much, Sahu sir. By the time, please be with us. Thank you for being a wonderful audience. जल्दी हम अपना टेबल को स्विच करके वर्किंग प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे कि किस तरीके से आपको किट को बनाना है, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बनाते चलिए किट को. जो भी अवेलेबल मटेरियल्स हैं आपके पास, आप उनका यूज़ करके, रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके आप बनाते चलिए. जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं. जल्दी ही आपको हमारी वर्क बेंच दिखाई देने लगेगी. जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड, प्लीज वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड.
Okay. Okay. आई होप आप लोगों को हमारी वर्किंग टेबल दिखाई दे रही होगी. Just wait. We will be resuming very soon. ओके. यस. ये हमारा वर्क टेबल है और आपको वहाँ पे रखी हुई किट भी आपको प्रोबेबली दिखाई दे रही होगी. यस प्लीज. साहू सर प्लीज कंटिन्यू. अच्छा ठीक है. Welcome back children. Now I hope that you must be seeing your work table, your work table, and the kit is very much displayed on the work table. Having gone through my presentation, some of the basics must have been clear. It will be easier for you to grasp the underlying concept of this kit. This kit is called an acrobatic stick kit. The kit, you can have a glimpse of the kit. There is a straight line here. There is a straight line, inclined straight line, inclined stick here. There are two slots, two curved slots. These two curved slots are in the shape of hyperbola. These are two branches of hyperbola. But the stick is a straight line. So here you have two curves. One is a straight line, the other are the branches of the hyperbola. Okay. Now we can rotate the curve about the vertical axis. Okay. These are the curves. To rotate the curve about the vertical axis, we have a CD. Please look at the CD. Okay, this is the CD. Okay, you can hold the CD and rotate the curve about a vertical axis. Okay. Now, as you rotate the curve about the vertical axis, you can see the curve is moving around. Okay, and the curve can easily pass through the stick. The curve can easily pass through the stick without touching the walls of the curve. In other words, the stick is entering into the curve and coming out of it without touching the walls of the curve. Although it is a curved slot, a straight stick is able to pass through a curved slot. That is really wonderful. Okay, so a straight stick is passing through a curved slot without touching the walls of the curved slot. Okay, so this is the kit. How does it happen? The curved slot is shaped into hyperbola. These are the two branches of a hyperbola, right? I've already told you in the presentation, if we arrange
a straight line in space, then the assembly of the straight lines in space can resemble a hyperboloid shape. A hyperboloid is a solid hyperbola. We can form a hyperboloid shape by the arrangement of a straight line in space. A cut section of a hyperboloid is a hyperbola. Because many such straight lines can make up a hyperboloid shape, and because cut section of a hyperboloid shape is a hyperbola, a straight line can easily pass through a hyperbola shape. So this is the mathematical reason how and why a straight stick can easily pass through a hyperbolic plot. This is the kit. Now we are coming to the third stage of the program, third and final stage of the program, how to construct this kit at your home. Okay, for that we require some basic materials. Okay, what are the materials required? Okay, I'll give you information about the basic materials. Okay, these are the materials. First of all, we need to construct the baseboard. Look at the baseboard. This is the base. The base is constructed out of foam sheets. Okay, foam sheet is a very soft and delicate sheet that can easily cut away with a knife, and many foam sheets can be joined together using Fevikwik glue. That's why, for flexibility of working purpose, we use foam sheets to generate different shapes. Okay, in our hobby activities, we frequently use foam sheets. So these are the foam sheets cut into different measurements. Okay, one base sheet we require, one upper sheet we require. Okay, both those sheets will put one above the other. Okay, these are the side sheets. Four side sheets we require. First of all, we'll take the base sheet. This is the baseboard sheet. Okay, over that we'll put a side stick like this, and both the pieces will be joined together using Fevikwik glue. Fevikwik glue is a very hard glue, mind you. Okay, we'll take another base sheet, another side sheet, and put it over the base sheet vertically. Again, it will be joined by Fevikwik glue. There are two other side sticks. Here we'll put one such side stick. There we'll put another side stick. So four sides pieces will be fixed up over the base sheet, and all the joinings will be made using Fevikwik glue. So when the side pieces have been fitted, erected over the baseboard sheet, then over that we can put another uh, foam board sheet. Okay. Again, we'll join all the sheets using Fevikwik glue. So if we make a structure like that, our base will be ready. So this is the base structure that will be ready. Okay. Over the base will be erect other structures, other components of the kit. So over the baseboard, we'll put off a CD. Acha. Give me the CD. This is the CD. Okay. The CD should rotate freely. Okay. We'll hold the CD and rotate the CD. So once you rotate the CD will be connected to the inclined stick. The stick will be there. The CD will be connected to the hyperbolic slots. The slots will move. No? Okay. So to rotate the hyperbolic slot, we'll require the CD. The CD should move freely. But the CD should move freely. It should be mounted over a gear. This is the gear. Okay. So over the baseboard sheet, the gear should be placed. The gear should be connected to the CD with Fevikwik glue. Okay. Then we'll put a straight rod. This is the straight rod into the gear like this. And this will be again joined by using Fevikwik glue so that the vertical rod will not hit either side. Okay. Look at the other end of the vertical rod. This end. This end is an L-shaped thing. Plastic
plastic structure is there, and this is a L-shaped thing. Okay, this is the vertical rod. So once you rotate the CD, this vertical rod will also rotate. Okay, vertical rod is connected to the gear. Gear is connected to the CD. So if you rotate the CD, vertical rod will rotate, keeping itself as the axis. Vertical rod will rotate. Okay. Now we'll have an inclined stick. This is an inclined stick. Okay. The inclined stick is connected to a plastic tube indicated by red color. Okay. The plastic tube will be inserted to the pin of the vertical stick. This is the vertical stick. This is the pin of the vertical stick. This is the plastic tube of the inclined stick, this inclined stick. Now we'll put them, insert the pointing rod into the plastic tube. Now this will be like this. So this will be our inclined rod. This will pass through the curved sheet. See the vertical rod. Vertical rod will be inserted into the gear. This is the gear, into the gear. Okay, like this. Okay, we can adjust the angle of the tilt of the straight stick. All right. Now, having made that, having made the base board for that, the inclined rod been mounted. Having made that, now we'll install the hyperbolic slots. So this is a seat that contains the two branches of the hyperbola. Hyperbolic slots have been made. Okay, now we'll insert like this this vertical seat that contains the hyperbolic curve. Okay, now we'll you look at the designs on the vertical seat. There are two hyperbolic slots being drawn, and a vertical slot also has been drawn. Okay, now we'll put the stick like this. Yes, vertical stick like this. To make our all our joinings sturdy, you have to apply Fevikwik glue, otherwise they will come out. Okay, so this vertical slot is to house the vertical rod. This is the vertical rod, like this. Vertical rod, and this vertical rod is connected to the CD. This is also connected to the gear, like this. Okay, and the bottom portion of this vertical seat, this seat should be connected to the CD using Fevikwik glue, so that if you rotate the CD, the vertical seat will also rotate. Now, having made that, our kit is 90% complete. Then we can change the angle of the stick. Okay, so that when it is rotated, we can rotate like this. You can rotate it. It can easily pass through the curved slots like this. You can change the angle. So this is how you can proceed from materials at scratch at your home and can build up this beautiful kit, and you can taste the some of the interesting property of a hyperbola. Thank you, children. So I hope that you must have gone through our program, and we also enjoy as much as you have enjoyed in going through this program. And if you ever get this material at home, try to make use of this material, and it's an hands-on activity. Make use of your hands to build up this kit and verify this interesting property of a hyperbola. Okay, Thank you. Let me take a few of your questions from the screen. So may I request Sahu sir to please answer them. Kit and verify this interesting. Okay, the very first question is, Sahu sir, are you getting my voice?
Yeah. Okay. A very first question is one of our viewer of the program is asking. Yeah. Then please explain how to draw the hyperbola curve on the sheet for the kit shown. Acha, we have some questions from some. Uh-huh. PCP and formal PCP. Okay. Yes, Saucer, please answer the question. Maybe it is. Actually, there are different methods given in the net how to draw a hyperbola. We can easily draw an ellipse. We can easily draw an ellipse. Doesn't matter. Ellipse can be easily drawn with the help of a thread. Suppose we fix two pegs, these will be two foci of the ellipse, and keeping the thread tightened, we can move around the two pegs. We can draw an ellipse, okay. But to draw a hyperbola, bit difficult. You cannot, okay. To draw a hyperbola, you can also use the thread. First of all, you have to choose two fixed points, two fixed reference points. That will be the foci of the hyperbola, and the thread has to be moved in such a manner that the difference of the point from the two foci is constant. Okay, so it is a bit difficult from construction point of view, to draw a hyperbola. Bit difficult to draw a hyperbola from construction points. Okay. Whereas it is easier to draw a circle, it is easier to draw an ellipse. Okay. It is little difficult to draw a parabola. It is also still more difficult to draw a hyperbola using the very definition of a hyperbola. Okay. That the difference, the hyperbola is the locus of all points, the difference of the points from two fixed points are this constant. Bit difficult to draw a hyperbola. But if you get different points on the hyperbola, okay, from the very definition, from the very formula of the hyperbola's formula is x square by a square minus y square upon b square is equal to 1. This is the formula of the hyperbola. X square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Okay. This is the formula of the hyperbola. So you can get different points on the hyperbola. Different x coordinate and y coordinate of reference points you can get from these points. Okay. If you get a set of points from this very formula of hyperbola, then put this set of points on a graph paper, okay, and join these points, then you will get a hyperbola. So it is easier to construct draw a hyperbola using the very formula of the hyperbola. X square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Okay, you generate that different pair of points that should be located on the hyperbola. Okay, then you join them with a pencil on a graph paper. You will get a hyperbola. So by this way, you can construct a hyperbola. Okay, thank you very much साहु सर. By the way, मैं रिक्वेस्ट करूंगा साहु सर से कि जो हमने स्टेंसिल तैयार करी थी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, तो जो लीफलेट जो बना हुआ है स्टेंसिल, जो उसकी ड्राइंग बनी हुई है, प्लीज उसको ऊपर कैमरा पे करके दिखाएं. प्लीज ओपन द कैमरा. और
ये स्टेंसिल हमने इस तरीके से ड्राइंग किया, ये ड्राइंग है इसकी। इसको एज ए स्टेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जो बच्चों को किट प्रोवाइड की जाएगी उनके किट में ये शामिल रहेगा। लास्ट में इस वर्कशॉप को ख़त्म करने से पहले एक बार ये जो हमारा रियल एग्जिबिट है जो कि फन साइंस गैलरी में रखा हुआ है, मैं इसकी वीडियो को एक बार प्ले करके इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। सो मैं अपने कलीग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्ले द शेयर द वीडियो एंड वेट फॉर अ व्हाइल। Please pause. Just be with us, and just in a moment I will play the video. Please stop. Yes, I'm just playing the video. You can have a look to the exhibit that is placed inside the Fun Science Gallery of our center, Regional Science Center, Bhopal. Now I may request my colleague to please play the video. हो गया टाइम।
आप सभी का एक बार पुनः मैं ढेर सारा धन्यवाद करता हूं हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए, जिसका नाम था ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन हाइपरबोला, फन विथ हाइपरबोला एक्रोबैटिक स्टिक। बीच में शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम की वजह से शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच हुई थी, बीच में थोड़ा सा लैग, थोड़ा सा गैप आ सकता है, सो सॉरी फॉर दैट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच प्रोग्राम्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी लोगों को, जिन लोगों ने भी हमारे कार्यक्रम को देखा, आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। हेलो। Okay, few of comments I have been receiving. Aditya Singh sir, Mars. Okay, Adit, we will do in our upcoming programs. We will surely try to capture, we will bring Mars on our screen, on your screen, I must say. Thank you very much.